Just see on the other next one. Humans have always been fascinated gazing at the night sky. We all love gazing. Gazing means staring at the night sky. हम देखते हैं ध्यान से, right? So this definition is very important. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers, right? This is very important. Those who study, जो celestial bodies के बारे में पढ़ते हैं and उनके movements के बारे में पढ़ते हैं, the ones who study about celestial bodies and their movements, those people, they are known as astronomers, right? Okay, now let's talk about Earth some more. Just see, conditions favorable to support life are probably found only on Earth. अच्छा, फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं, फेवरेबल मीन्स जिस पे आप स्टे कर सकते हो, राइट? फेवरेबल मीन्स जो आपके फेवर में हैं, दोज कंडीशंस आर ओनली फाउंड ऑन अर्थ. वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे हैं वो कंडीशंस. अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. अर्थ ज़्यादा हॉट भी नहीं है और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है, बिकॉज आप ज़्यादा हॉट में भी नहीं रह सकते, ज़्यादा कोल्ड में भी नहीं रह सकते, राइट? इट हैज़ वाटर एंड एयर, दिस वी ऑल नो, विच आर वेरी असेंशियल फॉर आर सर्वाइवल. वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, right? Okay, now the air has life supporting gases like oxygen. Obviously oxygen भी present है, and इन सारे reasons की वजह से हम अर्थ को क्या बोलते हैं? यूनिक planet. क्या बोलते हैं? यूनिक planet. Now from the outer space earth appears blue. अच्छा, आउटर स्पेस अगर हम बाहर से देखें, आपने देखा होगा ग्लोब में, लाइक अर्थ में जब आप डायग्राम देखते होगे अर्थ का या कहीं, हमेशा ब्लू कलर का होता है, ब्लू और ग्रीन, राइट? ओके, सो फ्रॉम आउटर स्पेस, बाहर से इट अपीयर्स ब्लू. And why? Because 2/3 surface is covered by water. अर्थ का 2/3 surface, अर्थ का 2/3 surface किससे covered है? वाटर से. That's why it is known as blue planet. इसीलिए इसे क्या कहते हैं? Blue planet. Okay, because 2/3 of its surface is covered with water. Okay, now let's talk about moon. Just see, our earth has only one satellite. हमारे अर्थ पे सिर्फ एक सैटेलाइट है, जो क्या है? मून. डायमीटर क्या है उनका? डायमीटर मीन्स this full diameter, right? This diameter is only 1/4 that of the earth. It appears so big because it is nearer to our planet, right? बहुत बड़ा लगता है, right? Because ये हमारे planet से पास में है. It is about 384,400 kilometer away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that of from the moon, right? Okay, the moon moves around the earth in about 27 days. कितने days में around कर move करते हैं? 27 days में. It takes exactly the same time to complete one spin. One spin means one round. 27 days में complete होता है. As a result, only one side of the moon is visible to us on earth. सिर्फ one side दिखता है हमको, पूरा राउंड नहीं दिखता दोनों साइड का. मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. लाइक अर्थ पे कंडीशंस फेवरेबल है बिकॉज वी आर हैविंग एयर, वाटर, राइट? ओके, ऑक्सीजन. बट ऑन मून इट इज नॉट favorable. It has neither water भी नहीं है, air भी नहीं है. It has mountains, plants, plains and depressions on its surface. Depressions means some sort of depressions means like these, right? Depressions means like these. Something has fallen, तो आप डिप्रेशन बन जाते हैं, वहाँ पे उनका निशान बन जाता है, right? So these cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows, right? Exactly नहीं होता moon. Some of the shadows which we'll not see from our terrace, हमें नहीं दिखेगा, but they are. Okay, now let's talk about asteroids. What are asteroids? Just see, stars. Apart from stars, planets and satellites, there are numerous tiny objects, again tiny bodies हैं बहुत, right? Which also move where? Around the sun. And these are called what? Asteroids. So again, tiny bodies which move around the sun are called asteroids. They are found between orbits of Mars. अच्छा, कहाँ पे हैं ये? Very important. Asteroids कहाँ हैं? Between orbits of Mars and Jupiter. Mars and Jupiter के orbits के बीच में. Orbits means path. उनके बीच में ये found होते हैं. These are tiny bodies which move around the sun, right? Okay. Now just see. Scientists are all of the view that asteroids are parts of planets which exploded. अच्छा, scientists को क्या लगता है that ये asteroids क्या हैं? Scientists feel that these asteroids are the parts of planet जो explode हो गए थे. Explode मतलब destroy हो गए थे, तो उनके कुछ parts रह गए हैं जो कि revolve करते हैं अभी भी around the sun. So वो parts क्या हैं?
एस्ट्रॉइड्स. सो टाइनी ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स. कहाँ पे होते हैं? मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट्स में के बीच में. Right? Now let's talk about meteoroids. Small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. Small pieces of rocks which move around the sun. Okay, so these are meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth, tend to drop upon it, and during this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. Right? Air में friction होता है, right? And due to that friction is a force, ठीक है, जो हमें बाइंड करके रखता है अर्थ पे. राइट? ओके, सो दिस ड्यू टू दिस फोर्स meteoroids fall on the earth, and due to this force क्या होता है? ड्यू टू दिस दे गेट हीटेड अप, वो जल जाते हैं, वो बर्न हो जाते हैं. इट कॉजेज अ फ्लैश, और उससे क्या होता है? इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट. फ्लैश ऑफ लाइट मीन्स एकदम से लाइट का फ्लैश होना. समटाइम्स अ मेटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो. कभी कभी क्या होता है? कुछ meteors मीन्स दीज टाइनी ऑब्जेक्ट्स, पीसेस ऑफ रॉक्स. राइट? सम ऑफ देम विदाउट बर्निंग, पूरी अच्छे से बिना बर्न किए, वो क्या कर देते हैं? एकदम से अर्थ पे फॉल हो जाते हैं, और इट क्रिएट्स अ हॉलो. हॉलो मीन्स एक गड्ढा बन जाता है. व्हाट इज द हॉलो? हॉलो लैंड मीन्स इट्स लाइक हॉलो थिंग. दैट मीन्स आप गड्ढा बन जाता है, वहाँ पे होल बन जाता है. राइट? नाउ डू यू सी अ whitish broad band like white glowing path across the sky on a clear starry night? Whenever you go on the terrace and see a clear, when the night is clear, no clouds, you will see that some white glowing path is there. White color का glowing path is there. Right? It is clusters of और वो क्या है? It is the cluster means group. What do we mean by cluster means group. Okay, so that group of millions of stars, क्या होता है वो? It's millions of stars का group, and this band is known as Milky Way galaxy. क्या कहते हैं? Milky Way galaxy इस band को और इस group को. Cluster of stars, cluster means collection. Okay, now our solar system is a part of this galaxy, और हमारा solar system जो है, it is the part of this galaxy. Which galaxy? Milky Way galaxy. Right? In ancient India, it was imagined to be river of light flowing in the sky. It was imagined कि क्या है? It is the river of light जो कि flow कर रही है sky में. Thus it was named as Akash Ganga. Now very important, what do we mean by galaxy? Galaxy is a huge system of billions of stars, clouds of dust and gases. So what is galaxy? It is huge system of billions of stars, बहुत सारे stars. Right? It's a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make, और ऐसी बहुत सारी galaxies हैं जो क्या बनाती हैं? Universe. Right? क्या बनाती हैं? Universe. It is difficult to imagine how big the universe is. हम imagine नहीं कर सकते how big our universe is. Scientists are still trying to find out more about it. We are no certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. Right? We don't know कितना बड़ा है Earth. We don't know कितना कितना size है and what all is there. But yeah, one thing we know, that we all belong to this universe. Everyone, anything that exists is in this universe only. Right? I hope you all have understood the chapter. Okay. First of all, we read about constellations, full moon, celestial bodies, stars, planets. So you all should go through these points. Okay. I've told you satellite, human-made satellites, artificial body. It's like artificial, जो human-made है. Right? Others will be provided in your notes. So go through these and try the back exercises of the chapter. I hope you have understood about Earth. Thank you.